Assalamu alaikum, boys and girls. Me, Sajid Jafri, again at the front of you. Or Alhamdulillah, after completion of the huge segment, we are moving ahead with the same spirit as we started. समझाता हूँ word organic. Word organic derived from the word organisms. याद रखना, अब ये मैं बातें बता रहा हूँ बेटा, please don't forget it. The word organic, ये जो word organic है ना, word organic derived from the word organisms, और organisms का मतलब होता है boys and girls living beings, और living beings का मतलब होता है animals or plants. ये बात याद रखिए. The word organic derived from the word organic. Organisms, organism means living beings including what? The animals and plants. हमेशा याद रखिएगा, पुराने दौर में I'm talking about 18th century, before 18th century. Previously the word organic derived from the word organism, which means living beings including animals and plants. Previously all compounds were originated from living beings, were so called organic compound. तो बात समझ पाएगी? I need your attention. गौर से देखिए, मैं बोर्ड पे मैं बताना चाह रहा हूं. Previously the compounds were classified on the basis of source or origin. और वो source और origin क्या था? Living being originated, or inorganic compounds were non-living originated. Like what? Addressed, sea, mountains, or very important, याद रखिएगा, previously the compounds were originated from non-living beings or non-living beings, like earth crust, like seawater, like mountains. Simply laboratory prepared compounds were previously so-called inorganic compound, and the compounds were originated from living beings like animals and plants were so-called organic compound. तो अगर सवाल आ जाए previously the compounds were classified, तो आपका आंसर होगा previously the compounds were classified on the basis of source or origin. Living being originated organic compound, because the word organic derived from the word organism, and non-living originated compounds were so called inorganic compound. Laboratory prepared compounds were so called inorganic compound. अच्छा ये बताइए मुझे, वो ऑर्गेनिक किन्हें कहा करते थे? जो लिविंग बींग्स से हासिल होते हैं, और लिविंग बींग्स में क्या होती है? लाइफ, जिंदगी क्या है? डिफरेंट पीपल्स हैविंग डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द लाइफ, ठीक है ना? बट नोबडी कैन डिफाइन द लाइफ, because the different have the different statement, or they see the life in different with different perception. But life exists, which is responsible for the continuity of your body functioning. Life is there. What is life? A vital force. बेटे याद रखिएगा, पुराने दौर में वो ऑर्गेनिक किन्हें कहा करते थे? जो लिविंग बींग से हासिल होती है, और लिविंग बींग में क्या होती है? लाइफ, जिंदगी, a vital force. तो पुराने दौर में, और regarding organic compounds, they were believed a theory called vital force theory. आइए देखिए ये क्या है.
भाई बॉयज एंड गर्ल्स घबराना नहीं है, ठीक है ना। VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। डोंट फॉरगेट, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहा करते थे, जो लिविंग बींग से हासिल होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल होते हैं। लिविंग बींग्स में क्या होती है, जिंदगी होती है, लाइफ होती है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक थ्योरी पर बिलीव करते थे, और उस थ्योरी का नाम क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर वाइटल फोर्स क्या है, व्हाट इज योर वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल फोर्स इज एक्चुअली लाइफ क्या है, योर जिंदगी। वो एक बिलीव करते थे वाइटल फोर्स थ्योरी पर। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी, देखें मैंने यहां पर मेंशन किया, लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड कंपाउंड्स वर सो कॉल्ड प्रीवियसली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो ऑर्गेनिक किन्हें कहा करते थे, जो लिविंग बींग से, एनिमल्स और प्लांट से हासिल होते हैं। देखिए ये मैं बहुत पुराने दौर की बातें कर रहा हूं ना, अर्ली 18th सेंचुरी। नो मॉडर्न साइंसेस वर देयर, नो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज वर देयर, no digital technology were there, no mobile phones were there, no advanced equipments over there. वो ऑर्गेनिक उन्हें कहा करते थे जो लिविंग बींग्स से हासिल होते हैं, और लिविंग बींग्स में होती है जिंदगी। तो उनका ये ख्याल था, उनका ये बिलीफ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए जिंदगी का होना जरूरी है। लाइफ इज नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिक कहा ही उन्हें करते थे जो लिविंग बींग से हासिल होती है, और लिविंग बींग में होती है जिंदगी। तो उनका ये ख्याल था, उनका ये बिलीफ था कि टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइफ इज रिक्वायर्ड। वो बिलीव करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार नहीं हो सकते। दे वर बिलीव ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बिकॉज दे वर बिलीव अ वाइटल फोर्स लाइफ, a vital force zindagi is required for their production. This theory is so called vital force theory. The life is required for the production of organic compound. They were believed organic compound cannot be prepared in the laboratory. So the theory long went unchallenged. बड़े तवील अरसे तक इस थ्योरी को बिलीव किया गया, एक्सेप्ट किया गया। You got it my point? बड़े तवील अरसे तक इस बात को एक्सेप्ट किया गया। अच्छा, प्रीवियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स वर लिमिटेड, सो द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर लिमिटेड, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर लिमिटेड। आई मीन टू से पुराने दौर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत कम थी, क्योंकि सोर्सेज वर लिमिटेड, क्योंकि लेबोरेटरी में उनकी प्रिपरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनते थे, क्योंकि उनका तो बिलीफ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन ही नहीं सकते, और इसी थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, लॉन्ग वेंट अनचैलेंज्ड। बट यू नो दैट many of the great discoveries and inventions are made by and accidentally or coincidentally। बेटा मैंने इंग्लिश में ये कहा, दुनिया में जो बड़ी बड़ी इन्वेंशंस, इजादात और दरियाफ्तें हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, वो इत्तेफाक से हुई, कोइंसिडेंटली हुई, या एक्सीडेंटली हुई, हादसाती तौर पर हुई। बनाना कुछ चाहते थे, बन कुछ गया, करना कुछ चाहते थे, हो कुछ गया, और कोई हादसा हुआ और एक नई चीज सामने आ गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्कवरीज और इन्वेंशंस मेड बाय एक्सीडेंटली और कोइंसिडेंटली। बिल्कुल इसी तरीके से जिस दौर में द पीपल्स वर बिलीव्ड कि organic compound cannot be prepared in the laboratory because they were believed a vital force life is required for their production, उसी दौर में he was a German chemist, his name was Mr. Frederick Wöhler। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। It was 1828। He was Mr. Frederick Wöhler. He was Mr. Frederick Wöhler. He was a German chemist. He was working in his lab.
बॉयज एंड गर्ल्स, बोर्ड पर नजर रखनी है आपने. I just tried ammonium chloride, potassium cyanate. All of these are inorganic compounds. याद रखिएगा उस दौर में ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. ठीक है ना. दिस कंपाउंड इज सेड टू बी अमोनियम साइनेट. ठीक है. All of these are inorganic compounds. He was working in his lab. This one ammonium cyanate, coincidentally he boiled. इसने इसको boil किया. देखिए प्लीज, ammonium cyanate when he did boil, जब इसने इसको boil किया, he obtained a new substance. He obtained a new compound which never been prepared. एक नया कंपाउंड बना. देखिए प्लीज. Ammonium cyanate, when he did boil, he obtained a new compound which never been prepared in the laboratory. This compound is said to be urea, or the chemical name of this compound is diamine ketone. आइए वापस चलते हैं. When the peoples were believed organic compound cannot be prepared in the laboratory because they were believed a life vital force is required for their production. उसी दौर में he was a German chemist. His name was Mr. Frederick Kohler. In 1828, coincidentally, he prepared a compound called urea. He was working on inorganic salt, ammonium chloride, potassium cyanate. He obtained the ammonium cyanate, potassium chloride. All of these are inorganic, but coincidentally when he did boil this ammonium cyanate, जब उसने इस ammonium cyanate को further boil किया, he obtained a new compound which never been prepared. When he did analyze this compound, which compound is this? It was very surprising for Kohler because the newly compound was typical urea. Urea is the major component of urine. Urine is originated from living beings. Urine is so called urine because of the urea in it because of the uric acid in it, ammonia, water and so on. Just recall my words in fundamental. The urine is the homogeneous mixture. One of the most important component of urine is urea. Urine originated from living beings, and the compounds were originated from living beings were so called organic compound. Regarding organic compounds, they were believed a theory cannot be prepared, but he obtained urea, one of the most important component of urine. Urea he prepared coincidentally without providing life. He repeated the process again, but he found the same substance. So after this coincidentally prepared urea, he called the scientist or the chemist of the same period and he said, guys, we believe organic compound cannot be prepared in the laboratory without providing life, but I got it. I prepared urea. Then they repeated the process again, but he found the same substance. Then they isolated natural urea from urine, and the urea prepared in laboratory, when he did compare, there was no difference. उनमें कोई फर्क नहीं था. After this event, after this coincidentally preparation of urea, now they started the research to prepare the other organic compound in the laboratory. देखिए बेटा, पहले तो काम ही नहीं होता था. जब काम ही नहीं होता था तो कंपाउंड बनाए नहीं जाते थे, क्योंकि लेबोरेटरी में सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम होता था, क्योंकि वो तो वाइटल फोर्स थ्योरी पे बिलीव करते थे. लेकिन यूरिया के बनने के बाद नाउ दे स्टार्टेड द रिसर्च. अब जब रिसर्च शुरू हुई, जब काम शुरू हुआ, तो फिर बनना भी शुरू हुए. इन फॉलोइंग ईयर्स, इस वाकये के बाद now they started the research to prepare the other organic compound in the laboratory, or in following years about mid of 18th century तक, यानी कि यहाँ से लेकर mid of 18th century तक 20-22 साल तक उन्होंने रिसर्च करी. और in following years they were able to produce hundreds of the organic compound in the laboratory. और फिर वो हजारों hundreds of the organic compound उन्होंने laboratory में बना लिए. So at the mid of 18th century collectively they decided no life is required for the production of organic compound. कि organic compounds को जब
जब सैकड़ों कंपाउंड लेवल तैयार हो गए इस वाकये के बाद, भाई पहले तो काम ही नहीं होता था, काम हुआ तो बनना भी शुरू हो गए। सो एट द मिड ऑफ 18th सेंचुरी जब हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बन चुके थे, तो सबने मिलकर ये फैसला किया, नो लाइफ इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए जिंदगी का होना जरूरी नहीं है। They believed organic compound can be prepared in the laboratory same as inorganic compound। उनका ये belief था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकते, लेकिन मिड ऑफ 18th सेंचुरी में कलेक्टिवली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ यूरिया कोइंसिडेंटली बाय वोलर, जब हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार हो गए, तो उन्होंने मिलकर ये फैसला दिया कि नहीं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए जिंदगी का होना जरूरी नहीं है। दे कैन बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी सेम एज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपली आई वांटेड टू से at the mid of 18th century, the vital force theory was decisively rejected or disproved। You got it my point or not? Simply, तो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर, हाँ जी, at the 1850s, rejected or disproved। जी मेरे बात समझ में आई सबके? तो अच्छा, तो बात वही है ना, लेकिन अगर बात है प्रीवियस सोर्स, जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, बट स्टिल वी रिटेन द सेम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ही वाज मिस्टर कैक्यूल। याद है ये शख्स? चैप्टर नंबर 7 में इसका नाम दोबारा आएगा ना, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में ना, लिव इट। मिस्टर ऑगस्ट कैक्यूल, फर्स्ट टाइम ही सेड द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको याद है मैंने सवाल शुरू किया था लेक्चर में, प्रीवियसली कंपाउंड्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर क्या होगा? सोर्स और ओरिजिन। प्रीवियसली, recently because we retain the same classification organic and inorganic, even we are in 21st century, but nowadays the classification based on composition। बेटा composition, इस पार्ट को खत्म करते हैं, आगे मूव करते हैं। recent classification based on composition। याद है पुरानी बात? composition, what a substance is made of, fundamentals। okay, तो Capsule, the carbon containing compounds are called organic compound। it was the first definition। अच्छा, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? when two or more, कम से कम भी दो होंगे, तो कार्बन तनहा तो नहीं होगा, तो कार्बन के साथ कौन होता है? in most of the cases, not always ना, in most of the cases beside carbon hydrogen is there। तो डेफिनेशन दी गई, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। पहली बार जो बात समझ आई वो क्या हुई? देखिए क्या थी वो? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्हें नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर, बॉयज एंड गर्ल्स, नाम दिया गया कार्बन एंड हाइड्रोजन कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें नाम दिया गया हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन कलेक्टिवली modified as a term, hydrocarbons are called organic compound। पहली डेफिनेशन, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन तनहा तो नहीं था, उसके साथ मोस्टली हाइड्रोजन होता है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कार्बन एंड हाइड्रोजन कलेक्टिवली मॉडिफाइड एज अ टर्म, हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर फर्दर क्वालिटेटिव एनालिसिस ने प्रूव किया कि भाई हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, इवन मेटल्स भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया गया डेरिवेटिव्स। क्या नाम दिया गया? डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन्स और आगे प्लस एंड अदर एलिमेंट्स
and other elements और वो दूसरे एलिमेंट्स कौन हो सकते हैं, वो दूसरे एलिमेंट्स कौन हो सकते हैं अदर एलिमेंट्स में, अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, इवन मेटल्स भी हो सकते हैं, इवन मेटल्स। उन्हें नाम दिया गया डेरिवेटिव्स। क्या नाम दिया गया? डेरिवेटिव्स। क्या नाम दिया गया बॉयज एंड गर्ल्स? डेरिवेटिव्स। तो आज के दौर की हमारी now the definition for organic compound nowadays, the hydrocarbons and their derivatives are called organic compound। आज के दौर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वहां तक मैं पहुंच चुका हूं। Nowadays the hydrocarbons and their ऐसे कंपाउंड which contains only carbon and hydrogen। बोर्ड पे देखिएगा, ये देखिए ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, पहले तो ये बात होगी। ऑर्गेनिक है, क्यों ऑर्गेनिक है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। कौन सा ऑर्गेनिक है? प्योर हाइड्रोकार्बन है या डेरिवेटिव है? ओनली हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, अच्छा ये बताइए अमोनियम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक, क्यों? कार्बन तो है ही नहीं। Because carbon is the main element must be present in all organic compound। Carbon oriented organic compounds are carbon oriented compound। सर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हाँ है, लेकिन कार्बन तो नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा ये देखिएगा, शाबाश, H2O। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कार्बन नहीं है सर, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हाँ भले हो, लेकिन कार्बन का होना लाजमी है। बिकॉज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन ओरिएंटेड कंपाउंड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा ये कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा ये देखिएगा, ये बताइए प्लीज, CH3OH ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक कंपाउंड। विच ऑर्गेनिक? प्योर हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव। क्यों? ये देखो, ये है प्योर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ऑल ऑफ दीज आर प्योर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनकी कंपोजिशन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। बट व्हाट अबाउट द अदर होमोलोगस सीरीज? अल्कोहल्स, अमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर्स, एसिड हैलाइड, एसिडमाइड, हैलोजन एल्केन्स एंड सो ऑन। ये all of these are derivatives because उनमें हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ उनकी कंपोजिशन में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या इवन मेटल्स भी शामिल हो सकते हैं। बेटा याद रखिए सारी बातें। तो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑल ऑफ दीज आर इनऑर्गेनिक। तो आप कंपाउंड को देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ऐसे डेरिवेटिव्स जिसमें मेटल शामिल हो जाए। चले ये बातें नहीं होती बुक में, वैसे ही आपको लिख देता हूं, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, याद रखिएगा। मेटालिक डेरिवेटिव्स आर सो कॉल्ड, मेटालिक डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर सो कॉल्ड। देखिए इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसको हटा दें यहां से ना, इसको यहां लिखिए CH3OH। हाँ जी ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिएगा। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? इनऑर्गेनिक। भाई मिक्स नहीं कर दो इसलिए कर रहा हूं ना। और ये भी है, लेकिन ये क्या है बेटा? डेरिवेटिव। तो पता ही चला ये कौन है? ये है ऑर्गेनिक। बेटे बात समझ में आ रही है सबके? ये दोनों ऑर्गेनिक है, इनमें प्योर हाइड्रोकार्बन है, डेरिवेटिव है, और जो बीच वाले कंपाउंड है ऑल ऑफ दीज आर इनऑर्गेनिक। तो बात हो रही थी, यहां पर मैंने एक बात लिखी है, मेटल्स भी इनकी कंपाउंड। देखिए आप ये ऑक्सीजन, अल्कोहल्स, अमाइंस, एल्डिहाइड वगैरह पढ़ते हैं, अल्काइल हैलाइड्स पढ़ते हैं, मेटल्स भी तो कई जगह पर आते हैं, उसके लिए खास टर्म इस्तेमाल होती है, मैं वो बता रहा हूं ना। मेटालिक डेरिवेटिव्स आर सो कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनोमेटालिक। क्या कहा जाता है उन्हें? ऑर्गेनोमेटालिक।
कंपाउंड्स। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्या कहा जाता है उन्हें? ऑर्गेनोमेटालिक। क्या कहा जाता है उन्हें? ऑर्गेनोमेटालिक। बेटे याद रखेंगे सारी बातें, स्पेसिफिकली नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। बेटे बात समझ में आ रही है सबके? एट मेनी प्लेसेस इन फ्यूचर यू विल सी माय वर्ड्स। मेरा ख्याल है कि आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो प्रीवियसली द कंपाउंड्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन और उसका एक वास्ट बैकग्राउंड इंक्लूडिंग द वाइटल फोर्स थ्योरी मैंने आपको समझाया। और रिसेंटली आपको मैंने बताया द रीसेंट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन। जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई तो आज की जो डेफिनेशन है वो बेस्ड करती है किस पर? कंपोजिशन। और कंपोजिशन क्या होनी चाहिए? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। अब अगर वो है तो ऑर्गेनिक एंड रेस्ट ऑफ देम। अगर वो हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव नहीं है, जैसे वाटर, अमोनिया, मीथेन, सॉरी नॉट मीथेन, दे आर सेड टू बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। द स्टडी ऑफ व्हाट इज केमिस्ट्री, यहां से पढ़ाना शुरू किया था ना मैंने। Structural, compositional study of matter, properties of matter and change in matter। तो अब आ जाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? The structural, compositional study, the study about the properties and change in hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. The structural, compositional study of the other than hydrocarbons and their are said to be inorganic chemistry. The task of the chemistry is to investigate the material, what a substance is made of. Compositional study, the way in which atoms are organized. The structural study, what are their features or properties or characteristics, physical or chemical. The task of the chemistry is to get the material like this. And the change in matter, change in material, change in inorganic salt, already have seen it in organic chemistry. And regarding organic compound, I will do some reactions for you. Hope you are getting my point. It was the vast background to the organic chemistry. Now we are moving ahead. आइए थोड़ा सा मूव कर रहे हैं हम आगे की तरफ। बेटा याद रखिएगा, अगली बार जो जहां से हमने बात शुरू करनी है, there are some exceptions। बेटा कुछ exceptions ऐसी हैं containing carbon but they are not organic। देखिए हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी कंपोजिशन में कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक में शामिल नहीं होते। आइए जरा समझ लीजिएगा प्लीज, आई नीड योर अटेंशन। एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है? कुछ कंपाउंड्स हैं, मैं लिख रहा हूं, यू डोंट फॉरगेट ना। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं। कौन कौन से हैं? मसलन देखिए, वर्ड्स देखना चाहना, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल से पोटेशियम साइनाइड, अभी लिखा भी था मैंने, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम डाइसल्फाइड, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, और भी हो सकते हैं, देखिए इन कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद है, कार्बन 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 है, बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं होते। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स containing carbon are organic because they are hydrocarbons and their derivative. But there are, यही तो वजह है मैं हमेशा आपसे कहता हूँ I don't believe on always, मैं हमेशा always पे बिलीव नहीं करता, है ना, ये हमेशा ये always पे बिलीव नहीं करता। There are some exceptions, but very few. Some of them I written: carbon monoxide, carbon dioxide, potassium cyanide, calcium carbonate, sodium hydrogen carbonate, calcium sulfide, calcium carbide। इनमें कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते? सो सिंपल, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज, बिकॉज देयर फीचर्स, बिकॉज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सिमिलर with those of typical properties exhibited by organic compound। because मैं लिख देता हूं इनके लिए, their properties, हाँ, their properties are features
The properties or features are not similar with typical properties that is possesses by organic compounds, hence they are excluded or exceptions. There are some compounds containing carbon, but they are excluded because the properties are not similar with those of organic compound. क्या होती हैं वो प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आई होपफुली के बॉयज एंड गर्ल्स आज आपको लेक्चर हमारा समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 6 आई जस्ट स्टार्टेड ऑर्गेनिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।